बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि PPSC, FPSC, ISSB, PMS, CSS, पुलिस, FIA, आर्मी, NTS ओ लेवल एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं, उनकी तफसीलात जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब्स के लिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये MCQs जो है बार बार रिपीट हुए हैं, जिनको हमने पास पेपर से निकालने के बाद इनको सॉल्व करके आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है वो है द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक्स अ। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, वॉलबॉक्स। द नेक्स्ट MCQs व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलबॉक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। विच ऑफ दीज डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी है, वॉलबॉक्स। मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इन विंटर। नेक्स्ट MCQs प्लांट, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मस्टर्ड। द नेक्स्ट MCQs द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by organisms communities is called। the correct option is option A, the area where the living organisms interact with non-living components of the environmental are called। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इकोसिस्टम। नेक्स्ट MCQ the area of the environmental where an organism lives is called। the correct option is habitat। next MCQs the part of earth where communities of living organisms exist is called। the correct option is option B, biosphere। the same species living in the same place at the same time makes a। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है डी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट MCQs द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बायोस्फीयर। ऑर्गेनल्स assemble to form। correct option is A, cells। the level of organizations that is less definite in plant is। the correct option is C, organ system level। next MCQs the water makes compositions of the protoplasma of all living things। the correct option is 60 to 70%। next MCQs which bioelements make most of the compositions of organisms body। the correct option is C, oxygen। bioelement is, the correct option is D, carbon। next MCQs the number of elements found in nature are। the correct option is C, 90। how many elements make 99% of the total mass। the correct option is B, 6। an example of macromolecule is। the correct option is C, protein। next MCQ which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm। the correct option is C, oxygen। the example of micromolecule is।
The correct option is C. Glucose. The elements that makes 3% of the total mass of living organism is. The correct option is D. Nitrogen. The study of drugs and their effects on human body is called. जो ऑप्शन दिए गए इनमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट MCQs. The study of the molecules of life is called. The correct option is option D. The correct option is B. Fossils. The next MCQs. The career related with gardening is. The correct option is B. Horticulture. The next MCQs. Which microorganisms is used for preparations of insulin? The correct option is D. Bacteria. The breeding of cow belongs to. The correct option is B. Animal husbandry. Dear students, इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके. खुदा हाफिज़.